बैक टू कल चौथी व्लॉग। सो ये है मेरी स्कूल ड्रेस। आज मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्कूल। अभी हम स्कूल में पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको अपना स्कूल दिखाना शुरू करूँगा। गाइस आप देखते रहिए और बताइए आपको मेरा स्कूल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है मेरा स्कूल JNN जीनियस विद्याश्रम। तो गाइज मैं और नायरा, प्राची दीदी और पायन भैया इसी स्कूल में पढ़ते हैं और ये है नायरा की क्लास। और कैसे तो गाइज ये बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि ये ट्रिप 3 क्लासों का था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब हम पहुंच चुके हैं अन्ना लाइब्रेरी म्यूज़ियम। तो गाइज आप हमारे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सारा म्यूज़ियम दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर मैम सभी बच्चों को काउंट कर रही थी और सबकी रो बनवा रही थी। तो गाइज ये है टाइप ऑफ टेलीविज़न। अब तक हमारे किस किस टाइप के टेलीविज़न आए और कैमरास आए। तो गाइज अभी हम दूसरी वे के लिए निकल चुके हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो गाइज आप आगे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। What's going on? El Niño. The ocean and atmosphere are a coupled system, working to balance the Earth's heat distribution in response to the uneven heating of the Earth's surface. This attempted balance drives the major wind patterns and ocean surface currents around the world as they dance to move heat to where it is cold and cool where it's too warm. The trade winds are the prevailing winds in the tropics, blowing from east to west, from the Americas to Asia, and in part a result of this unequal heating. These winds were used for centuries by sailing ships crossing the world's oceans to conduct trade, giving them their name. Normally the trade winds are strong, dragging warm water across the Pacific, where it piles up in the western Pacific as a pool of warm water. When the ocean waters move away from the coast of South America, cooler, nutrient-rich water from below moves up to replace it, a process called upwelling. This nutrient-rich water promotes the growth of plankton, microscopic plants and animals that are prey for small fish that, in turn, are prey for larger fish. The result? One of the largest fisheries along the coast of South America. But in some years, the trade winds weaken, or even reverse direction, allowing warm water piled up in the western Pacific to slosh back across the tropical Pacific toward the coast of South America. The upwelling of colder water slows down or stops. This lid of warm, light water prevents the deep, cold, heavier, nutrient-rich water from reaching the surface. The result? The collapse of a huge fishery.
This is what Peruvian fishermen call El Nino, the Christ child, because it typically comes around Christmas time. Even though the name El Nino has this local origin, its impacts can be global in extent. An El Nino usually occurs about every 3 to 7 years, and they aren't all the same. Some are much stronger than others. Really strong ones occur only infrequently, perhaps every 10 to 20 years. When a strong El Nino occurs, it can disrupt ocean conditions throughout the entire Pacific, which impacts weather around the globe for more than a year. The weather effects of each El Nino can be a blessing or a curse for different continents around the world. In some places, it may bring beneficial rain. In others, droughts, dangerous heat waves, and heavy rains and floods. Typically, an El Nino lasts less than 1 year. It ends when the trade winds regain their strength, pushing the warm water away from the coast of South America back to the west. But this adjustment may overshoot and swing too far, resulting in unusually cold water off the west coast of South America. This is called La Niña, the little girl. More often, it ends up somewhere in the middle. It's like a dance. Sometimes the music speeds up, sometimes it slows down. In this dance, the atmosphere initially has the lead and the ocean follows. Later, the ocean controls and the atmosphere follows. It is the extreme El Niños and La Niñas that take the greatest toll on humans and on marine life. Fortunately, our ability to forecast El Niños has improved dramatically over the past few decades. Our instruments have gotten... तो गाइस अभी मैं ट्रिप से वापस आ चुका हूँ और तो गाइस मुझको शाम को 4 बज गए थे आते आते। इसी ट्रिप के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।